Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Inside Bulletin. Moving into the details, speaking at the inaugural ceremony of the Global Investors Meet in Bengaluru, Defence Minister Rajnath Singh highlighted that investing in Karnataka means not only gaining access to the state's resources, but also having the full support of the nation behind it. Friends, beyond all these factors, there is an even bigger advantage. When you invest in Karnataka, you are not just gaining access to Karnataka's resources, you have the strength of the entire nation standing with Karnataka. India's economic ecosystem is deeply integrated, which means investing here gives you access to the country's vast and diverse resources. If your business requires minerals, you can source them from Chhattisgarh and Odisha. If you need skilled manpower, the hard-working professionals from Uttar Pradesh and Bihar will be ready to contribute. If your supply chain depends on MSME's output, you will find robust support from Noida and Coimbator's MSME entities. When you invest in Karnataka, you are not just investing in one state, you are tapping into the collective strength of India's vast resources and Friends, beyond all these factors, there is an even bigger advantage. When you invest in Karnataka, you are not just gaining access to Karnataka's resources, you have the strength of the entire nation standing with. Well, Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena, speaking on his vision to transform the capital into a city of flowers, shared that 3.25 lakh tulips have been imported by NDMC, while DDA has planted tulips in 20 parks and an additional 15,000 tulips have been planted indigenously. Saxena emphasized Delhi's beauty and his commitment to making it even more attractive. Netherlands Ambassador to India, Masira Gerards, praised the initiative, highlighting that this effort will strengthen the friendship between India and the Netherlands. आपको याद हो जब मैंने 22 मई को जब एलजी का चार्ज दिया था, उस वक्त मैंने कहा था कि दिल्ली सिटी को सिटी ऑफ फ्लावर्स बनाना है और ये उसी कड़ी में काम हो रहा है। इस बार करीब 3,25,000 ट्यूलिप्स को इंपोर्ट किया गया है एनडीएमसी द्वारा। डीडीए ने भी अपने करीब 20 पार्क्स में ट्यूलिप को लगाया है और इस साल जो बेस्ट पार्ट है 15,000 ट्यूलिप जो है हमारे इंडिजिनस ट्यूलिप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनको पालनपुर CSIR ने डेवलप किया है। एम है कि हम 4 साल में ट्यूलिप्स के इंपोर्ट को खत्म करके इंडिजिनस ट्यूलिप्स को लगाने का काम करें और उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। दिल्ली बहुत खूबसूरत सिटी है, उसे और खूबसूरत बनाना है। आप बांसेरा जाइए, असीता जाइए और भी जो बहुत सारे गार्डन्स हैं उनमें जाइए। डीडीए ने भी किया है और एनडीएमसी ने भी अपने अलग अलग पार्क्स में लगाए हैं। तो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फूलों से जोड़ सकें और आप देखते हैं जैसा कि यहाँ पर कितने सारे लोग जो हैं ट्यूलिप्स के बीच में खड़े हैं, फैमिलीज के साथ हैं, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। तो इसको हम बढ़ाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। दिल्ली वालों के लिए तो अनुभव बेहद ही खास होने वाला है, लेकिन आपके लिए ट्यूलिप फेस्टिवल में वॉक जो थी वो भी नीदरलैंड एम्बेसडर के साथ, क्योंकि नीदरलैंड एक हब माना जाता है ट्यूलिप के लिए, तो उनके साथ एक ये ट्यूलिप वॉक कैसा था आपके लिए? इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने में एक एक्सपीरियंस है कि ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ नीदरलैंड इज विद मी, उन्होंने हमारे साथ वॉक किया and she was also appreciating the way we have planted or we have to learn from each other. This we were discussing this. कुछ चीजें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट की कि यहाँ पर जिस तरीके से केयर की जाती है प्रॉब्ली नीदरलैंड्स में नहीं हो पाती है। जो यहाँ के माली हैं वो बहुत ट्रेंड हो गए हैं, जिन्होंने जिस तरीके से रख रखाव किया हुआ है। एक सवाल ये भी उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर
कोई नुकसान तो नहीं होता इनको। तो मैंने कहा कि रिपब्लिक दिल्ली की इतनी समझदार है कि वो उसको अप्रिशिएट करती है, कभी किसी को डैमेज नहीं करती है। इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस भी यहाँ पर किसी ने किसी को डैमेज नहीं किया है या किसी को उखाड़ के दे के नहीं गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिल्ली। ट्यूलिप इज अ फ्लावर ऑफ फ्रेंडशिप, ये खुद एम्बेसडर ने अपने आप बोला है। तो अगर मैं इंडिया और नीदरलैंड के बीच के रिश्ते के बारे में पूछूं तो वो कैसा है? वो एक्चुअल में वो फ्रेंडशिप को डेडिकेट है? वो बिल्कुल, और एक फ्लावर का नाम ही जो है मैत्री है। Yes. जो मुझे बताया गया अभी, तो मैत्री का मतलब है कि फ्रेंडशिप। Exactly. तो दिल्ली, अगर आपको याद हो, जब मैंने 22 मई को जब एलजी का चार्ज दिया था, and management efforts in the state, the program was aimed at discussing the preparedness for future floods events and reviewing ongoing relief activities to mitigate the impact of recent floods in several districts. In his address, CM Saha highlighted the government's commitment to providing immediate relief to affected communities, including the distribution of essential supplies such as food, water and medical assistance. He also emphasized the importance of strengthening flood management infrastructure to prevent future disasters. Flood relief operations are underway and we are ensuring that all affected areas receive timely support. Additionally, we are taking steps to improve flood management systems across the state to minimize the damage caused by such events in the future, said CM Saha. The Chief Minister also noted that the state government is working in close coordination with various agencies and organizations to ensure that all necessary measures are taken to protect citizens and reduce the impact of floods. Efforts to improve drainage systems, strengthen embankments and raise awareness about disaster preparedness are part of the long-term strategy. The program also included discussions on rebuilding damaged infrastructure and providing long-term support to flood-affected families. CM Saha assured that the government would continue to prioritize flood management and relief initiatives in the coming months. আজকে সত্যি অভয় মিশন সম্পর্কে আমি আগেও প্রায়শই কেউ না কেউ যারা ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি এই মিশনের সাথে যুক্ত আমার ওনাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার গোচরে আনতো। কিন্তু মাননীয় সম্পাদিকা মহোদয়া যখন এখানে পুরো বিষয় বলছিলেন যে ওনারা সারা বছর ধরে কিভাবে কাজ করেন এবং দেশ বিদেশ বিভিন্ন জায়গার থেকে এই ধরনের ত্রাণ সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জিনিসগুলো ওনারা সমস্ত যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য যেভাবে ওনারা ডিস্ট্রিবিউশন করে সত্যিই এর জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। 1988 থেকে ওনারা এই অভয় মিশন একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওনারা কাজ করে আসছেন। এখানে আপনারা 2024 অগাস্ট মাসে যে বন্যার পরিস্থিতি হয়েছিল, আমার মনে হয় ত্রিপুরাতে এত মারাত্মক আকারে এই ধরনের বন্যা আমরা কখনো আমরা দেখিনি। এবং যখন আমার মনে আছে 19 আগস্ট আমি দিল্লিতে ছিলাম, সেখানে মাননীয় আমাদের গৃহমন্ত্রীজির ওখানে আমার মিটিং হচ্ছিল। উনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে ত্রিপুরার কিরকম বৃষ্টিপাত কিরকম হচ্ছে, মানে বৃষ্টি অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে অনেক দেরিতে, মেইন ল্যান্ড যেগুলো আছে নর্থ ইস্ট বাদে সব জায়গায় কিন্তু বৃষ্টিপাত অনেক দেরিতে হয় বা অনেক সময় বৃষ্টিপাত কম হয়। তো অনলি বৃষ্টিপাতের জন্য উনি জিজ্ঞেস করছিলেন কিরকম হচ্ছে। তো আমার কাছে 19 তারিখেই কিন্তু একটু মানে বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা হচ্ছে। আমি বললাম বৃষ্টি তো হচ্ছে কিন্তু মনে হচ্ছে বিশাল আকারে বৃষ্টি হবে। তো 19 তারিখ যখন আমি আগরতলায় ডাইরেক্ট চলে আসি, আসার পর 20 তারিখ সকালে খুব সম্ভব, তো আমি এই অবস্থা দেখে আমি আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে আমি চলে আসি, একটা মিটিং করি আমার ওয়ার রুমে, সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্ট চিফ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে সবাই সাথে কথা বললাম যে আমাদের কি করণীয়। তো সেইভাবে কিন্তু সমস্ত মানে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং আমাদের
যারা অফিসাররা আছেন লাইন ডিপার্টমেন্টের সবাই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে কিভাবে এই বিপর্যয় থেকে আমরা নিস্তার পেতে পারি, সাধারণ মানুষকে নিস্তার দিতে পারি জানাচ্ছি। আজকে সত্যি অভয় মিশন সম্পর্কে আমি আগেও প্রায়শ কেউ না কেউ যারা ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি এই মিশনের সাথে যুক্ত ওনাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার গোচরে আনতো, কিন্তু মাননীয় সম্পাদিকা মহোদয়া যখন এখানে পুরো বিষয় বলছিলেন যে ওনারা সারা বছর ধরে কিভাবে কাজ করেন এবং দেশ বিদেশ বিভিন্ন জায়গার থেকে এই ধরনের ত্রাণ সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন যে জিনিসগুলো ওনারা সমস্ত যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য যেভাবে ওনারা ডিস্ট্রিবিউশন করে সত্যিই এর জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। 1988 থেকে Adani Defence and Aerospace CEO Ashish Rajvamshi revealed that the company has already invested approximately rupees 5,000 crore in the defence sector and plans to invest an additional $1 billion over the next 4 to 5 years. Further on, we have the small arms portfolio. The whole factory is being set up in Gwalior. Over the last 7 years, we are producing end-to-end every small arm in the country, from 9mm pistol all the way to light machine gun, sniper, including the raw material being consumed from within the country. It's a 100% indigenized product today being done from Gwalior. We are supplying to Indian Army, we are supplying to Indian Navy, we are supplying to Indian Air Force and to the special forces within the country. Further on the left, what you're going to see is one of our innovative and a very important capability on surface-to-air missiles. There's a capability which is important not only for Army, Navy and Air Force. It's an active, ongoing contract with the Tri-Services in which we're working on Arka, which is 7 kilometers man-pad, shoulder-fired, surface-to-air missile. We have gone up further. We are working on the design program with Indian Navy that how do you put a multi-turret surface-to-air missile system on every ship, every carrier is one of the design innovation what Adani has done. Just behind me, what you see is one of the most important control center. For the first time, we are showcasing AI-powered drones. The drones which can be integrated with artificial intelligence. So it's platform agnostic. This is not about Adani or XYZ, but the whole data feed can go from AI in a box. And in no time, this whole module, which is based on deep learning computer vision, based on the customization which can be done for my customers. Someone wants to see a specific target which is important in the water. Someone wants to see a target which is important on the ground. And this AI module can actually help you, rather than sitting with terabytes of data, give you intelligent outcome. Why is this important? Because data analytics and data mining, every platform which is flying on the ground in the in the naval domain is actually producing data. But if we don't have the right algorithms to mine this data and give insights for our customers, this will all be post-mortem of this data many months, many years later. So the whole AI ML module just behind me, along with cybersecurity, is something what we're going to showcase, and we are showcasing to our customers in Aero India. Happy to answer any questions. Otherwise, we are happy to move you and showcase the real platforms. And further on, we have the small arms portfolio. The whole factory is being set up in Gwalior. Over the last 7 years, we are producing end-to-end every small arm in the country, from 9mm pistol all the way to light machine gun, sniper, including the raw material being consumed from within the country. It's a 100% indigenized product today being done from Gwalior. We are supplying to Indian Army, we are supplying to Indian Navy, we are supplying to Indian Air Force and to the special forces within the country. Further on the left, what you're going to see is one of our innovative and a very important capability on surface-to-air missiles. There's a capability which is important not only for Army, Navy and Air Force. It's an active,
ongoing contract with the Tri-Services in which we are working on Arka. Speaking at the launch of Samsung Galaxy Empowerment Initiative, Olympic gold medalist shooter Abhinav Bindra emphasized the transformative impact of technology and artificial intelligence on education and sports. He highlighted how AI can aid in athlete performance, recovery and injury prevention through analytics. Bindra also stressed that AI's integration into sports is democratizing knowledge, improving access and empowering not just athletes but also the entire support ecosystem, including coaches, physiotherapists and psychologists. Samsung Empowerment Galaxy Empowerment Initiative is a wonderful initiative. It is to empower teachers. Teachers are not just educators, teachers really are nation builders. And we are living in such dynamic times where, where technology is really taking over our lives. Technology is also disrupting education in many ways. Artificial intelligence is coming up in many different ways where education is being impacted. So this initiative is really helping empower teachers to come to speed with current day technology and things like artificial intelligence. So it's a great initiative which will empower and help educate teachers, which in turn I think will have a great impact on students, on our youth, which is great. You just talked about technology. Talking about sports, especially in sports like shooting, how do you think it can help and provide a basis for that? See, technology is, I've been saying it for many years, that plays a very, very important role. The roles of sports science, for example, is a very critical element of our athletes achieving global success. It really is the difference between being good and being great. It is that 0.1%, and that can only be leveraged through science and can be only leveraged through technology. So it's a very, very important role that has a role in every part of an athlete's journey. Also things like talent identification, for example. When an athlete is just starting out, technology and science can play a very important role in identifying the right talent for the right sport. So there is a very big role that science and technology can play. Now AI is coming into sport as well. They're already coming in many ways for talent ID, for coaching, because in previous, one of the things in sport is that access to sport, access to knowledge is not available across the length and breadth of this world. But through AI, I think sport and knowledge will be democratized much more because access will improve, and that access can only improve through technology. And how do you feel about in shooting? How can AI revolutionize or bring in changes in that? Well, not just shooting, but I think in all sport, I think it can help in analytics. It can help really help in analyzing things like recovery. Because recovery plays a very important role in the performance of an athlete. So a recovered athlete is a more capable athlete, is a fresher athlete, has capacity to perform better under pressure. That in turn can play a very big role in prevention of injuries. Because if technology and AI can help in showing recovery patterns, and if an athlete is not recovering well enough, it is sooner or later going to result in an injury. But if you can prevent that, I think that just improves performance of athletes. It also improves the longevity of an athlete. So great role, and it can empower not just the athletes but also. Well, I think this Samsung Galaxy Empowerment Initiative is a wonderful initiative. It is to empower teachers. Teachers are not just educators, teachers really are nation builders. And we are living in such dynamic times where, where technology is really taking over our lives. Technology.
After attending the Pariksha Pe Charcha program, Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Sai spoke about Prime Minister Modi's ongoing efforts to support students. He also highlighted that PM Modi has been holding the Pariksha Pe Charcha sessions with students for the past 8 years. The CM also acknowledged that students face significant pressure and stress due to exams, and these sessions provide much needed guidance. He also commended PM Modi for offering advice and strategies that help students manage their stress, ensuring that they can navigate the challenges of academics more effectively. यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और ये उनका इस तरह से चर्चा 8वीं बार है। पिछले 8 वर्षों से देश के बच्चों के साथ वो परीक्षा पे चर्चा करते आ रहे हैं और आज करीब 5 करोड़ बच्चों के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा किया है। आप सब लोग भी, हम लोग भी सब स्टूडेंट रहे हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो कहीं न कहीं मन में भय रहता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, पास हो पाएंगे कि नहीं। कहे कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा, पढ़ते तो हैं कोर्स में जो है, लेकिन प्रश्न तो मतलब परीक्षा दूसरे की इच्छा है, कौन सा प्रश्न आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। Punjab Chief Minister Bhagwant Mann responded to criticism urging Pratap Singh Bajwa to focus on counting the MLAs his party has in Delhi. He has defended Punjab's law and order, claiming it is better than the most other states, and emphasized the additional efforts required to maintain security as a border state. He also assured that the state government is fully committed to ensuring safety and order despite the unique challenges posed by its border status. प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਈਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ। देखो जी, प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। Well, those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Stay tuned.